What is latte makeup? Yes, everywhere it is very trending nowadays, very much viral latte makeup look. So in today's video, I have created a step-by-step tutorial for you all on this viral latte makeup look. So please इस वीडियो को पूरा देखिए. जब आप लाटे मेकअप के बारे में सुनते हो तो सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में क्या आता है? यस, कॉफ़ी. आज के मेकअप में हम लोग बहुत ही वार्म न्यूट्रल टोन्स यूज़ करेंगे. कूल टोन्स हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है. एंड दिस मेकअप इज़ क्रिएटेड टू अचीव वार्म, ब्रॉन्जी एंड अर्दी लुक. ये आपको एक सन किस्ड लुक प्रोवाइड करता है. और इस मेकअप की सबसे अच्छी खासियत है कि इट लुक फैबुलस ऑन ईच एंड एवरी स्किन टोन. सो लेट्स स्टार्ट. I'm feeling my skin very dry, so first I will moisturize it with a Clinique Smart Repair Day Cream, and then I will apply Swiss Beauty Real Makeup Base, which acts as a primer as well as a strobe cream. And then the most important step, that is bronzing. Here I am applying a cream bronzer by Clinique that will help to look my skin warm and sculpted. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है. हमें फाउंडेशन के पहले अपने स्किन को ब्रॉन्जर अप्लाई करना है एंड देन वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट विथ एन थिक एंगुलर ब्रश. I know now it is looking very weird, but you have to trust the process. Once the entire makeup is done, it looks stunning. Next, I will use this Smashbox Tinted Moisturizer to even out my skin tone. This has a very sheer coverage, so it will not cover the bronzer. Next, I will apply concealer to hide my dark circles and pigmentation. Once blend with a beauty blender to get a natural finish. Then I will set my under eyes and entire face with this Maybelline loose powder. Very lightly I am going to set my entire face. Now I am going to bake. Remember, before baking, you have to lightly set your makeup with loose powder. Directly हमें baking कभी भी नहीं करनी है. Keep it for 2 to 3 minutes and then dust the extra with the fluffy brush. Now I will set my base with Swiss Beauty Makeup Fixer. For eyebrows, I will apply Morphe Eyebrow Gel. First, इससे मैं अपनी eyebrows को set करूँगी. ऐसे upward strokes use करना है. And then I am going to fill my eyebrows with eyebrow pencil very lightly. बहुत ज़्यादा dark नहीं करना है. Only I am filling the gaps. That's it. नेक्स्ट कंसीलर से इसे क्लीन कर लूँगी फॉर दैट नीट लुक. फॉर आईज, फर्स्ट आई विल अप्लाई कंसीलर एज एन आई बेस एंड ब्लेंड इट. नेक्स्ट आई विल यूज़ दिस शेम्बर स्कल्प्टेड जेल आई शेडो इन द शेड डार्क ब्राउन. इसे पूरे आईलिड में अप्लाई करेंगे एंड देन स्मज इट विद अ ब्रश. Next, from Huda Beauty Nude Palette, I will take this shade and apply to my crease as a transition shade. This will also help to avoid any harsh lines. Next, from Rose Gold Palette, I will take a bronze shimmer shade and apply on top of it. For eyeliner, I will apply this dark brown gel pencil and smudge it with an angular brush. For lower lid, same dark brown gel eyeliner I am using. Next is the powder bronzer. This is the highlight of the entire makeup. इससे हमें वो earthy, bronzy, warm, sun-kissed look achieve होगा. Next,
I will use this K Beauty liquid blush. This is a very beautiful warm blush tone. Blush is optional. If you want to skip, you can. As always, I am going to lock my liquid blush with this powder blush. I will apply a golden highlighter. बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है because in this look, bronzer will be your highlighter. For lips, I will line my lips with warm brown lip liner. Then I will apply Parul Garg matte lipstick in the shade Daisy, followed by a lip gloss. Finally, I will set my makeup with Swiss Beauty Makeup Fixer. And this is my final look. It is a very warm sun-kissed look जो बहुत ही stunning दिखता है. ये makeup अभी बहुत trending है, so please आप इसे ज़रूर try करना. I hope this video helps you. आपने कुछ सीखा होगा आज इस वीडियो से. And if you don't subscribe my channel, please do subscribe it by hitting the bell icon. That's all for today. See you in my next video. Till then, live happily and stay beautiful. Bye.